गुड मॉर्निंग बेटा। चलो एक पेपर कर लेंगे जल्दी जल्दी। जस्ट रीड द क्वेश्चन पेपर बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी। ये आइडियल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन है, शायद वी कैन ट्राई टू डू इट आउट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 अपन ट्राई कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू पार्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर 2 एसएचएम का क्वेश्चन है, ये भी अपन ट्राई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, consider the following two statements and choose the correct options. A beam of white light is given a spectrum through a hollow prism. ray optics का ये भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस करंट इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टर्स वगैरह देखने के साथ ही आ रहा है, तो भी आई होप वी कैन डू दिस क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 ये भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गैसेस का ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वेव्स का हम लोग बाद में करेंगे। 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेंटर ऑफ मास का है, हम लोग रिवीजन नहीं किया तो विल ट्राई टू डू इट लेटर। क्वेश्चन नंबर 12 इज इलास्टिसिटी कंपल्सरी करना है। 13 इट्स फ्लूइड स्टैटिक्स का है, डायनामिक्स का है। देन क्वेश्चन नंबर 14 इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 15 इज डाइफ्रैक्शन, ये करना है आप लोगों को इस साल में भी। The next one is mechanics का है। 17th वन करना है, न्यूटन्स लॉस ऑफ Kepler's लॉस का है। देन क्वेश्चन नंबर 18 थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर्स का है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 इलेक्ट्रिसिटी, 21 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 20 भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड 22 is electromagnetic waves, 23 is p-n junction diode, 24 also we can do, and 25 we can do, 26 we can do, 27 we can do, 28 अपन को करना है, 29 भी अपन को करना है। Then question number 30, 31, 32, 33, 34, 35 और इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट है। 36 अपन ट्राई कर सकते हैं। 37 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दिख रहा है मुझे। 38 is waves, 39 thermodynamics वगैरह दिख रहा है मुझे, we can do it out. Then 40 is circular motion, then the flow of the holes, ये कर सकते हैं अपन। 41 is fluid dynamics, Young's double slit experiment ये भी कर सकते हैं। रेडियो ट्रांसमीटर ऑफ वेवलेंथ, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, ये भी ट्राई कर सकते हैं। then क्वेश्चन नंबर 44 भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तो किसी हाल में आप लोगों को करना ही है। क्वेश्चन नंबर 46, देन क्वेश्चन नंबर 47 भी अपन ट्राई कर सकते हैं, लग रहा है मुझे ऐसा। देन क्वेश्चन नंबर 48 इज आरएमएस, देन क्वेश्चन नंबर 49, 50। चलिए सभी लोग पेन पेपर लेके अपने हिसाब से आप लोग ट्राई करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, ideal gas equation for 9 gram of hydrogen gas will be। Ideal gas equation for 9 gram of hydrogen gas will be, please give me the answer in a chat box। Everyone, Krishna, Pilza, Mehdiya, Ahmed Al-Taqseen, Mehdiya, Firdos, समरीन, आंसर देना बेटा आप लोग, प्लीज डोंट सिट मॉम। एग्जाम में लोग लिखना नहीं है, आप लोगों को करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ने के साथ देखो क्या फॉर्मूला याद आ रहा। ठीक है, पेन एंड पेपर एवरीवन। जैन बोल रहे हैं 1, समीरा भी बोल रहे हैं जैन 1, कृष्णा चलो जल्दी, अमतुल तकसीम 1, वेरी गुड। और कृष्णा
डन बेटा। कृष्णा कितना आ रहा बेटा? Ideal gas equation for 9 gram of hydrogen gas will be equal to or how much? Am I audible to everyone? ऑप्शन 1 सर। कैसा बेटा? ये कितना बोला है? 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस बोला है, इसमें आइडियल गैस का इक्वेशन होना है। इतना बेसिक क्वेश्चन कैसा भूल गए बेटा आप लोग? पीवी इज इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी होता है ना। एन क्या होता है बेटा? मास बाई मास इज 9, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर हाइड्रोजन गैस कितना होता है बेटा? 2। 9/2 मतलब कितना हो जाएगा? 4.5 आ गया ना। तो पीवी इज इक्वल से कितना बन जाएगा? 4.5 टाइम्स ऑफ योर आर, 4.5 टाइम्स ऑफ आर इंटू टी, 4.5 टाइम्स ऑफ आर इंटू टी। थर्ड ऑप्शन आएगा। आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। The displacement of two particles of same mass executing the simple harmonic motion are represented by the equation y1 is equals to 8 sin 10t plus pi by 6 and y2 is equals to 10 cos omega t. Value of omega for which the total energy of both the particles are remaining for me the same. दोनों की एनर्जी सेम है बेटा, यानी E1 is equal to your E2. एनर्जी इन SHM का फॉर्मूला क्या है बेटा? E is equals to your half into K into your A square. ए की वैल्यू क्या होती है बेटा? हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू योर ए स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी। तो दोनों की एनर्जी सेम है, सो इट इज हाफ इंटू पार्टिकल ऑफ द फर्स्ट वन इज m1 इंटू ओमेगा। फर्स्ट वन के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बताओ मेरे को पहले। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM लिखते हैं हम लोग, y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन ओमेगा t प्लस ऑफ योर 5। तो ओमेगा के प्लेस में यहाँ पर कितना है? अभी यहाँ पर 10, isn't it? So this will be equal to your omega का प्लेस में 10 whole square into amplitude. Amplitude के पोजीशन में क्या है यहाँ पर? 8. So it is your 8 whole square. Second equation के लिए half into this will be ratio. The value of total energy for both the particles are remaining same. What is asking is value of omega. Okay. इसके लिए भी पार्टिकल का लिए मास क्या रह जाएगा बेटा? This will be equal to your m2 into ओमेगा की वैल्यू इसके लिए क्या है बेटा? सेकंड इक्वेशन के लिए दैट इज राइट नाउ फॉर मी ओमेगा, सो दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर इनटू दिस वन नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट इक्वल टू 10, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब देखो दोनों का मास सेम बोला है प्रॉब्लम में, सेम मास, यानी m1 विल बी इक्वल टू m2 दैट इज m, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ m और हाफ m विल गेट कैंसिल। 10 स्क्वायर इज राइट नाउ फॉर मी 100, है ना। 10 स्क्वायर भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, फिर करने की जरूरत नहीं है। So this is 8 square, 8 8 is 64, that will be equal to your omega square. यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8। ओमेगा is equal to 8। आया सभी को? Very good. चलिए क्वेश्चन नंबर 3। Consider the following two statements and choose the correct option. A beam of white light gives the spectrum through the halo prism. Speed of the light outside the halo prism is different from the speed of the light inside the halo prism. See, whenever a ray of light is been passing through the any medium, the speed of that one will be decreasing, isn't it? And a beam of white light gives the spectrum through an halosphere. Halosphere मतलब क्या हो जाएगा बेटा? Halosphere mute yourself बेटा, मतलब दक्षिण। चलो कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। हैलो प्रिज्म मतलब ऐसा कुछ, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, मटेरियल नहीं है, isn't it? तो यहाँ पर सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। यू नो दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म, सिर्फ यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। फिर यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर एक्चुअली ये डिस्पर्शन करेगा, लेकिन ये पूरा हैलो होने के वजह से यहाँ पर सिर्फ डिविएट होके चले जाएगा, isn't it? So beam of white light does not give any spectrum on passing through an halo prism beta. And when the white light is passing from A to A, refractive index is remaining same, so there will be no change in the speed also. अगर ये इसका refractive index mu होता तो speed change होती, तो यहाँ पर speed change नहीं होगी। यहाँ पर अगर C है तो यहाँ पर भी C होगी, इसके अंदर भी C भी होगी। इसके पास refractive index नहीं है ना बेटा, इसलिए
So when light is passing from A to A, एक ही medium से और एक medium में जा रही है, and both the mediums are same, then there will be no change in the speed. So what will be the answer for this one? Both A and B are. Statement 1. The beam of white light gives the spectrum. नहीं देगा, so it is wrong. Speed of light outside the halo's prism is different from the speed. No, the speeds are same. So what is the answer I can write? Statement A is correct, but statement B is incorrect. दोनों भी wrong है बेटा. Statement A and B are correct. Statement A and B are incorrect. So fourth option will be the answer. Done. Next one. Fourth one आप लोग try करिए एक बार जल्दी से. Following figure shows a network of 8 resistors, each equal to 4 ohms, connected to a battery of 18 volts and having a negligible internal resistance. Current drawn from the battery in the circuit will be. ये बोलना आप लोग, कल भी रिवीजन कराया मैंने आप लोगों को. Following figure shows a network of 8 resistors. यानी इसका कितना है मेरे पास? 4. इसका रेजिस्टेंस है 4, इसका रेजिस्टेंस है 4, इसका रेजिस्टेंस है 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4. फोर आप क्या बोल रहे हो? आंसर बोल रहे हो कि ऑप्शन बोल रहे हो? समीरा शहजीन, आप लोगों को मार तो मैं, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, नींद में रह के क्वेश्चन कर रहे, सर का है एग्जाम को 4 दिन नहीं है, पढ़ने के बाद भी इतनी गलतियां करे तो नहीं होता. Following figure shows a network of 8 resistors, each equal to 4. Isn't it? 2 से जब ज्यादा है तो पहले अपने को क्या आइडेंटिफाई कर लेना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये अपन को आइडेंटिफाई कर लेना है. तो यहाँ पर 1 2 3 4 P by Q is equals to R by S. This will become for me ineffective. 1 2 3 4. This one is also will become ineffective. अब करो. ऊपर एक रेजिस्टेंस आएगा 1, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया 1, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया 1, फिर उसके साथ नीचे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया, फिर उसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, फिर उसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस. देन नेक्स्ट वन, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव. एक टाइम का खाना कम करो आप लोग, खाना बहुत हो गया. छोटे छोटे क्वेश्चन अभी वैसे ही फाइनल एग्जाम में नहीं करके आए तो फिर परेशानी. नाउ व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन बेटा? This two will be 1 2 3. This will be in series. तो ये पूरा एक इफेक्टिव बन जाएगा और नीचे का भी एक इफेक्टिव बन जाएगा. Isn't it? This is connected to one positive terminal and this is connected to one negative terminal. चलो अभी करो, आंसर बताओ. ये कितना बनेगा बेटा? हाँ, अब कैसा आया? मिस्टेक्स नहीं करना बेटा एग्जामिनेशन हॉल में. 2 से ज्यादा है तो पहले आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा है देख लेना इमीडिएटली. 4 4 4 will be in the series. लेकिन कितना बन जाएगा? 12. ये नीचे भी 12, दोनों पैरेलल में है तो कल ही बताया था अगर सेम है तो इट इज R by N का फॉर्मूला ले लीजिए. सो इट इज 12 divided by 2 यानी 6. R effective is in the 6 combination. पोटेंशियल कितना दे रखा है प्रॉब्लम में बेटा? बैटरी कनेक्ट लिया हुआ है 8 वोल्ट्स, तो इसमें से करंट कितनी जाएगी? सो करंट कितना जाएगा बेटा? I is equals to V by R. V की वैल्यू है 18, R की वैल्यू है 6. Isn't it? So 6 1 जा 6 3 जा कितना आ रहा? 3 amperes.
Question number 5. The magnitude and direction of the current I indicated in the following circuit will be equal to how much? The magnitude and direction of the current I indicated in the following circuit. Kirchhoff first law. बताइए जल्दी. आ गया. ऑप्शन 1. और कोई? The magnitude and direction of the current I is indicated in the following figure. Incoming currents must be equal to outgoing currents. आ गया. अमतल, फिल्जा, महिदिया, फिरदौस, बोलना बेटा आंसर. किरचॉफ फसला लगाइए. मुस्तफा, जैन, समीना, मदिया तबस्सुम. Incoming current must be equal to outgoing current. Sir, I answered first option. अच्छा, first option आ रहा है आंसर. 2 amperes from A to B. और किसी को कुछ आ रहा है?
इनकमिंग करंट कितना है बेटा? देखो 6 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, 6 प्लस 3 प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट. आउटगोइंग करंट कितना है बेटा? 7 प्लस 2 प्लस 1. सो इनकमिंग करंट कितना हो गया? 12 है, और आउटगोइंग करंट कितना है? 7, 8, 9, 10. तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 माइनस 10 यानी 2 एम्पियर्स. So it will be 2 amperes from which direction बेटा? करंट यहाँ से आ रहा है तो it will go towards the point. So it is from point A to the point B. ऐसा जाएगा. Very good. 2 amperes from your A to B. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करिए. Two plane mirrors shown in the adjoining figure are making an angle 60 degrees each other. A light ray falls on one of the mirror as shown in the figure. The light ray is incident parallel to the angular bisector of the mirror. The number of reflections that a light can undergo will be equal to how much? Direct question है. When it is been incident on the perpendicular bisector right now, तो जितना एंगल से इंसिडेंट होगी ये अगर उसका नॉर्मल हो जाएगा बेसिकली, isn't it? तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब ये 30 डिग्रीज, तो ये भी 30 डिग्रीज हो जाएगा. अगर ये 30 डिग्रीज हो गया मतलब नॉर्मल के साथ ये बन जाएगा 60 डिग्रीज, और ये टोटल एंगल बनेगी 90 डिग्रीज. तो यहाँ पर जितने एंगल से इंसिडेंट है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी. सो अगर इसका मैं रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिए, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आके यहाँ पर ऐसा गिरेगी. तो इसकी एंगल कितनी बनेगी बेटा? एंगल विल बी रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्रीज बनेगी. नॉर्मल रे गिर रही है, जितने एंगल से गिरेगी उतने एंगल से वापस जाएगी, क्योंकि ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितनी बनेगी बेटा? 30 बनेगी. 60, 70, 80, 90, ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ द टोटल एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो ये 90 डिग्रीज बन गया. सो द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? n is equals to 360 divided by theta. 360 divided by theta की वैल्यू कितनी है? 60. कितना आ रहा? Sorry, 30 आना ना, angular bisector. Total angle between them is right now for me 60 degrees. Number of images. This is mirror M1, crisscross method लगा लीजिए. This is a mirror M2. So this will make an angle of 30 degrees. This will also will make an angle of 30 degrees. An angle between them is 60. So यहाँ पर 90, और यहाँ पर भी 90. Then again this one is 60. So this will be equal to 150. This one is also here 150. Number of reflections पूछ रहा है, number of images नहीं. Number of images होगा तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of images जो फॉर्म हो रहे हैं that will be equal to 6. Reflections कितने हो रहे हैं बेटा? यहाँ पर गिरा, ये इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया, फिर यहाँ पर गिर रहा है, रिफ्लेक्ट हो गया, isn't it? 1, 2, फिर यहाँ पर गिर के ये रिफ्लेक्ट होगा इस तरह से फाइनली. तो पूरे 3 रिफ्लेक्शंस होंगे. डन. नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस पूछा, नंबर ऑफ इमेजेस नहीं पूछा. नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस मतलब देखो फर्स्ट रे ऐसा गिरी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, सो दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्शन. मिरर पे गिरी, 90 डिग्रीज पे गिरी तो जितने एंगल से इंसिडेंट उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई 2. फिर इस पे यहाँ मिरर पे गिरी, मिरर पे गिर गई फिर वापस जा रही है 3. सो टोटली 3 नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हैव बीन सीन. डन बेटा. चलिए गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. An ideal gas in a cylinder is compressed adiabatically to 1/3 its volume. During the process, if 40 joule of work is done on the gas by the compressing agent, the change in internal energy of the gas will be equal to how much? Adiabatic process मतलब क्या बेटा? What do you mean by adiabatic process? Delta Q is equals to 0 होगा ना? Float लगाइए, first law of thermodynamics. If I'm applying the float, delta Q is equals to delta U plus delta W. डेल्टा क्यू तो 0 हो गया, isn't it? So delta U plus delta W, यानी work done will be equal to your minus of your internal energy. So during the what do you call that one, compressed adiabatically to 1/3 of its volume, during the process if 40 joule of work is done on the gas by compressing the agent, the change in the internal energy will be equal to your how much? कितना आ रहा है बेटा? 40 joules. कंप्रेस हो रहा है ना, नेगेटिव साइन दे रहा है.
कंप्रेसिबल का ऑलरेडी प्रॉब्लम में बोला, आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। डन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, ऐसा साउंड का आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन भी करे होंगे। Vibrating in the third overtone with maximum amplitude A, the amplitude distance of L by 4 will be equal to how much? Third overtone मतलब कितने हार्मोनिक्स बेटा? Third overtone means fourth harmonic, यानी इसमें कितने बनेंगे? 4 loops बनेंगे। 1, this is 2, this is 3, this is 4। फिर इसका रिफ्लेक्शन भी होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है। सो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच मीटर? लैम्डा बाय 2, isn't it? टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसका? लेंथ एल, तो एग्जैक्टली हाफ के पास एल बाय 2, isn't it? एल बाय 2 का हाफ एल बाय 4। बस समझ में आ रही? टोटल लेंथ यहां से यहां तक अगर एल है तो यहां से यहां तक ए बन गया मेरे को एल बाय 2, और उसका आधा फिर से मतलब यहाँ पर एल बाय 4 लेंथ। एल बाय 4 के पास क्या बन रहा है? अपने नोड बन रहा है ना, तो अगर नोड के पास एम्पलीट्यूड कितनी हो जाएगी? 0। डन। चलो, an electric dipole is placed in uniform electric field to have the minimum potential energy. Angle between dipole moment and electric field will be equal to how much? Potential energy का formula U is equals to minus of PE into your cos theta. P is the dipole, E is electric field, theta is the angle between them. U will be minimum when cos theta value is equals to 1. तो theta की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब cos theta की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, then U minimum will be equal to minus of P होगा ना, तो for what angle it will become minimum? मतलब cos theta value must be equal to 1, theta value must be equal to 0। थियरी क्वेश्चन है। चल, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ने नहीं ठीक किया, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। When a deforming force is applied to a body parallel to its surface, its shape changes, not the size. The strain produced in this manner is called as of your what? Longitudinal strain, volume strain, shear strain, none of this. You should tell this answer. When deforming force is applied on a body parallel to its surface, देखो ऐसा कुछ हम लोग ने पढ़ा था। अगर ये बॉडी है, इस पे अगर हम लोग फोर्स ऐसा लगा रहे हैं पैरेलल टू दिस वन, तो ये थोड़ी देर के बाद शेप ऐसा कर जाएगी, तो इसमें स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ पर। तो कौन सा स्ट्रेन दिख रहा है बेटा? शेयरिंग स्ट्रेन। वेरी गुड। शेयरिंग स्ट्रेन मतलब थर्ड वन। Next one. A car 1000 kg is lifted by a force F as shown in the figure. The force required to lift the car, where R1 and R2 are the radius of the surface area of the two sections 1 and 2, will be equal to your how much for the given condition? Pascal's law beta. We can apply here Pascal's law. Pascal's law याद है किसी को? What is the Pascal's law बेटा? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। यहाँ पर जितना प्रेशर लगाओगे यहाँ पर भी उतना ही होगा, यानी Pf1 डिवाइडेड बाय योर A1 will be equal to your F2 divided by your A2. The force required to lift the car, F में दे रखा है, a car of 1000 kg is lifted by force F as shown in the figure. The force required to lift the car when R1 and R2 is the radius of the surface area of the two sections 1 and 2 is nearly equal to your how much? F is equal to M into G, isn't it? A car of 1000 kgs is being lifted by force F. इसको हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं with the force of your F, यानी यहाँ पर जितना फोर्स लगा रहे हैं अपन, so this F2 will be equal to how much? Weight of this body acting in the downward direction, that is M into G. मास दे रखा है 1000 into G की वैल्यू हो गई 10, isn't it? तो यहाँ पर हो गया F2, तो ये F1 निकालना। This F1 is equals to how much? So F1 will be equal to your F2 into your A1 divided by A2. So F2 will be equal to 1000 into G. कर लो जल्दी से, आ जाएगा।
This one is 1000 into G की value हो गई 10 into area pi into R1 square divided by pi into R2 square. Pi or pi will get cancelled. Okay, this is in the form of what? Radius पे लिख रहे हो तो that will be the area of the circular path. So ये हो गया 10 to the power of 4 into R1 की value कितनी है बेटा? Where R1 and R2 are given for me. R1 is given as of 10 in the problem. So this is your 10 divided by R2 की value कितना दे रखा है 30 का whole square. ये 0 चले गया. So it is 10 to the power of 4 divided by 9. देख लीजिए कितना आ रहा, यानी 10,000 divided by 9. कितना आएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करिए. First diffraction minima due to a single slit diffraction is at theta is 30 degrees. For a light of wavelength 5000 angstroms, the width of the slit will be equal to your how much? Direct formula based. For the first diffraction minima, यानी YDSC का मैक्सिमा यहाँ पर मिनिमा बनेगा बेटा. YDSC का मैक्सिमा यहाँ पर मिनिमा बनेगा, YDSC का मिनिमा यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, बट ओनली साइन कन्वर्शन इज प्लस लेना है बस. सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिनिमा का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? D sin theta will be equal to your n into lambda, isn't it? फर्स्ट मिनिमा बोल रहा है, यानी D sin theta will be equal to lambda. यानी d into your sin theta की वैल्यू 30 degrees will be equal to lambda is 5000 angstroms. Then तो d की वैल्यू कितनी आएगी? sin 30, this is 5000 into 2, so that will be equal to how much or better? 5 2 is 10,000. d की वैल्यू आ गया. Anyone? ये फॉर्मूला याद रखना था आपने. For the first minima, d sin theta is equals to n plus 1. मिनिमा के लिए बेटा d sin theta is equals to 2n plus 1 into lambda. मैक्सिमा के लिए. Very good. Second option. Done. Next one. Question number 17. According to Kepler's second law of planetary motion, the aerial velocity of the planet around the sun is equal to L is the angular momentum of the planet and m is the mass of this one. ये आप लोग by heart याद रहना चाहिए था. Aerial velocity मतलब dA by your dt is directly proportional to your L by 2m, angular momentum, and inversely proportional to the mass. Isn't it? So what is the answer I can write? 17th one. Second law, dA by dt is directly proportional to L by 2m. Third option. आ गया. चलिए. Question number 18. A container contains the boiling water and a centigrade and Fahrenheit thermometers are dipped into the boiling water. The water is then cooled until the Fahrenheit thermometer registers 120 degree Fahrenheit. What will be the fall in the temperature as registered by the centigrade thermometer? So try करिए. Relation between the Fahrenheit scale and as well as of your Celsius scale. Temperature of the boiling point कितना है बेटा? Boiling water के लिए temperature कितना होता है? 100 degree Celsius. मतलब that will be equal to your 100 plus 273. That will be equal to how much for me? Kelvin में ले लीजिए. चलो डिग्रीज में रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 100 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए. और Fahrenheit स्केल के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? याद है किसी को? 212 डिग्री Fahrenheit. रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड Fahrenheit स्केल क्या है आप लोग याद है? F is equals to 9/5 into C plus 32. यानी डेल्टा F is equals to 9/5 into डेल्टा C. डेल्टा F कितना है बेटा? 212 minus 120 दे रखा है प्रॉब्लम में. That is equals to 9/5 into डेल्टा C अपन को निकालना. चलो निकाल दीजिए. डेल्टा C is equals to
कृष्णा करना बेटा एग्जामिनेशन हॉल में सर्वे पेपर पेन निकाल के ट्राई करो डायरेक्ट क्वेश्चन है देखो फॉर्मूले से ही याद आना है बस आप लोगों को टाइम में आ गया कितना आ रहा डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 51.1 डिग्री सेल्सियस चलो क्वेश्चन नंबर 19 करिए बेटा गुड क्वेश्चन ये आप लोग कर सकते हो ट्राई करो इक्वल अमाउंट ऑफ 3 लिक्विड्स ए बी एंड सी मेरे पास ए लिक्विड है मेरे पास बी लिक्विड है और सी लिक्विड है इनिशियली द टेम्परेचर्स ऑफ ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस क्लास में भी करे थे अपन और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस are being taken A and B are mixed पहले A and B are mixed the equilibrium temperature of the mixture becomes for me 15 degrees Celsius when B and C are mixed the equilibrium temperature becomes for me 35 degrees Celsius then equilibrium temperature when A and C are mixed this temperature will be equal to how much heat lost by the hot body must be equal to heat gained by the cold body 19th one when B and C are mixed beta when B and C are mixed who is losing and who is gaining beta 30 degrees centigrade will lose and 10 degrees Celsius will gain that means B will lose A will gain isn't it matlab heat lost by one body must be equal to heat gained by another body mass of your A specific heat of your A into temperature difference 15 minus of your some temperature के पास आ रहा है that is nothing but of your 10 common temperature दे रखा ना that is equals to your mass of your B specific heat of your B it is losing यानी 30 minus of your 15 को आ जाएगा दोनों का masses same दे रखा है इन दोनों को cancel कर लीजिए so it is specific heat of your A 15 minus 10 is nothing but equal to your 5 that is equals to specific heat of B 30 minus 15 is nothing but 15 5 ones are 5 threes are isn't specific heat of your A divided by specific heat of your B will be equal to your 3 this is my equation number 1 second part of your question second part when B and C are mixed when B and C are mixed बताइए कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा 50 डिग्री सेल्सियस है it will lose and it will gain isn't it so heat lost by heat gained by this body again that is nothing but of your MB specific heat of your B into इसका टेम्परेचर कितना है बेटा 50 तो कॉमन टेम्परेचर कितना आ रहा है 35 यानी 35 से 30 हो जाएगा ये फाइनल टेम्परेचर इसका इनिशियल टेम्परेचर 30 है फाइनल टेम्परेचर 31 है so that is equals to mass of C specific heat of your C into temperature 50 minus of 35 ये दोनों के masses cancel हो गए the specific heat of your B will be equal to how much beta 3 times so the specific heat of your B 35 minus 30 is your 5 the specific heat of your C 50 minus 35 will be equal to how much beta 15 so 5 ones are 5 threes are isn't it so specific heat of your B divided by specific heat of C will be equal to again 3 that's the equation number 2 अब लास्ट में क्या बोल रहा है बेटा when A and C are mixed when A and C are mixed जब ये दो मिक्स करेंगे कॉमन टेम्परेचर पे आ रहा ये 10 पे है ये 50 पे तो दिस विल लूज एंड दिस विल गेन isn't it यानी दिस इज योर मास ऑफ योर A स्पेसिफिक हीट ऑफ योर A इनटू हायर टेम्परेचर क्या आएगा T लोअर टेम्परेचर इसका हो गया 10 क्योंकि इनिशियली 10 है ये गेन करेगा गेन करके 11 12 13 14 कुछ जाएगा तो वो T ले रहा हूं that must be equal to mass of your C specific heat of your C into this is 50 minus of your T दोनों का masses same है isn't it simplify this relation specific heat of your A divided by specific heat of your C will be equal to 50 minus T divided by T minus 10 SCA by SC कितना आ रहा बेटा चलिए SCA is equal to यहाँ से लिख सकता हूँ मैं SCA will be equal to your 3 times of your SB divided by SC will be equal to how much for me beta SB divided by your 3 that is equals to 50 minus T divided by T minus 10 SB will get cancelled
यानी 3 3 is 9. 9 is equals to 50 minus t divided by t minus of your 10. आ गया? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 9 into t minus 10 is equals to 50 minus of your t. यानी हो गया 90 minus 90 is equals to 50 minus t. All the t terms एक जगह ले लीजिए बेटा. यानी this value will become how much for b? ये 90 minus t इधर आ गया तो plus t, that is equals to ये 50 minus 90 इधर गया तो plus 90. So this will be equal to how much for me? 10t is equals to ये कितना बन जाएगा बेटा? 90 plus 50 140 बन जाएगा. So t value is 0 चले गया तो t value will be equal to your 14 degrees Celsius. थोड़ा लेंथी है बट करने वाला क्वेश्चन. आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इतना डिटेली करना पड़ा. अगर मेरा कैलकुलेशन होता तो शायद 1 मिनट के अंदर अपन करने वाला क्वेश्चन है आराम से. गुड क्वेश्चन, ऑलरेडी हम लोग क्लास में भी कर चुके हैं. थोड़ा प्रैक्टिस करो. अगर ऐसा वाला आ गया तो लकीली यू कैन डू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा. Let me know how many of you will give me the answer. Which among the following IV characteristics is a correct PN photodiode? You know that photodiode is being used in the reverse bias. It is used in your reverse bias. Photodiode is used in reverse bias. ये हो गया reverse bias, isn't it? याद रख लीजिए photodiode is always used in your reverse bias. So what will be the answer for this one, beta? Krishna 3. IV characteristics पूछ रहा है बेटा. ये रिवर्स बायस थोड़ी ही है. ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है. देखिए फोर्थ वन आएगा. समीरा शहजील वेरी गुड. फोर्थ वन आएगा रिवर्स बायस में. ये देखो फोटोडायोड में आईवी का कैरेक्टरिस्टिक जब लेते हो तो ये फॉरवर्ड बायस होगा और ये रिवर्स बायस होगा. ठीक है, चलो 24 ट्राई करिए. The current flowing through the resistance 1 kilo ohm in the circuit in the given figure is, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. सो ये P जंक्शन होगा, ये N होगा, ये N होगा और ये P होगा. तो ये तो रिवर्स बायस हो गया. This one is reverse bias because N is connected to positive terminal. So there is no flow of the current in this one. So the current flowing through the resistance 1 kilo ohm in the circuit will be, यहाँ से करंट जा रहा है तो इसी में जाएगा. ये फॉरवर्ड बायस है, ये पूरा इनइफेक्टिव बन जाएगा. तो I is equals to V by R effective. V की वैल्यू 10 है. R effective कितना होगा बताइए? ये 500 ओम है, 1 किलो ओम है. 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम्स और ये 500 है. तो सर्किट ऐसा कुछ बनेगा बेटा. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बैटरी है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है. तो ये हो गया 500, ये हो गया 500 और ये हो गया 1000. यानी R effective will be equal to your 2000 ohms, isn't it? So this one is your 2000. And ये 0 gets cancelled, so I is equals to 1 by 200 हो जाएगा. And this will be 1 by 2 into 10 to the power of minus, so 10 to the power of 2. 1 by 2 मतलब 0.5. 0.5 into 10 to the power of minus 2. 0.5 मतलब 5 by 10 into 10 to the power of minus 2. मतलब this will be equal to 5 into 10 to the power of minus 3. यानी this will become for me 5 milliamperes. 24. 5 milliamperes. आ गया. Next one. अब ये तो करो आप लोग. The force is given in terms of the time t and displacement x by the equation. The force is being given in terms of time t and displacement x by the equation. F is equals to A into tan alpha x plus C into cos beta t. The dimension formula of your alpha by beta is, trigonometric values have no dimensions beta. ये आप लोग को याद रखना है. Trigonometric values exponentials are right now for me dimensionless. यानी I can say here alpha into x is your m0, l0, t0. That is your dimensionless, isn't it? So dimensional formula of alpha कितना बन जाएगा बेटा? Alpha value will be equal to your, alpha की value बन जाएगी यहाँ पर
alpha is equals to 1 by x, यानी that is 1 by L, यानी L power minus 1. उसी तरह से beta into T will be equal to your dimensionless, यानी beta is equals to 1 by T. So that is T power minus 1. So it's asking the ratio of your alpha by beta, यानी alpha divided by beta. Alpha की value L power minus 1 है और beta की value T power minus 1 है. So this will become for me L power minus 1 T power 1. So dimensional formula will become for me M0 L power minus 1 T power 1. So which option beta? First option. Very good. Next one, question number 26. Two resistance R1 is equals to 100 plus or minus 3 ohms, R2 is equals to 200 plus or minus 2 ohms are connected in series. The equivalent resistance can be expressed as. चलो जल्दी से बोलो. फोर्थ वन बोल रहे हैं और कोई आंसर कुछ. सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है बेटा? R in series will be equal to your R1 plus R2. इसका एरर भी ऐड हो जाएगा, डेल्टा R1 plus डेल्टा R2, isn't it? So this will be equal to how much beta? 100 plus or minus of your 3 plus this will be 200 plus or minus of your 2. 100 plus 200 that is 300 plus or minus ये दो एरर्स भी ऐड हो जाएंगे, that will be equal to 5. So 300 plus or minus of your 5. Next one, choose the correct relation between electric field and current density. Electric field is directly proportional to, that is sigma into j tha. So E is directly proportional to the J. J is your what beta? Current density. So E is directly proportional to your J. Formula yaad rakhna beta. This is actual Ohm's law. Question number 28, sorry. The masses of neutron and proton are 1.0087 and 1.0073 AMU respectively. If a helium nucleus of the mass 4.0015 AMU is been formed by combining neutrons and protons, the binding energy of the helium nucleus will be equal to how much? One AMU is given as of your 931. Binding energy क्या होता है बेटा? Binding energy AMU में डेल्टा M 9 to 931. डेल्टा M मतलब बेटा मास डिफेक्ट. तो फर्स्ट वन क्या है मेरे पास? masses of neutron and proton are 1.001 respectively. Helium mass का भी न्यूक्लियस दे रखा है. So this will be equal to your Z helium के लिए 2 into this will be 1.0087 plus 2 into 1.0073 minus mass of helium nucleus 4.0015 multiplied by 931. ये कर लो, whatever the answer will get, that will be the answer. समझ में आया ना? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या था? M delta M is equals to Z into mass of proton plus Z into mass of your neutrons minus mass of your nucleus. Done. Sure. I'm leaving the calculation for yourself. You आप लोग देख लीजिए कितना आ रहा है basically. Question number 29. This is good question, but again, total energy of an electron in hydrogen atom in the ground state is given as minus 13.6. The kinetic energy of the electron is, अगर ये नहीं बोले मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़े सकते. कृष्णा बोलो बेटा फॉर्मूला. Kinetic energy will be equal to negative of total energy atomic structure में. मतलब that will be minus total energy is minus 13.6. So that will be equal to how much for me? Plus 13.6 electron volt. कितना आसान क्वेश्चन था. Question number 36. Which of the following is based on the total internal reflection? Optical fiber, brilliance of diamonds, twinkling of star, both 1 and 2. जल्दी. Four. Krishna Rao, very good.
Optical fiber communication and brilliance of diamonds is due to the total internal reflection. Twinkling of the stars is due to reflection. Sure. Question number 39 try करिए. थोड़ा lengthy question होगा शायद, but still you can still do that question. Try करिए सभी लोग question number 39. Helium gas goes through the cycle A, B, C, D, A consisting of two isochoric and isobaric lines as shown in the figure. The total heat supplied is greater than 0 to the gas will be equal to how much? PV का ग्राफ है बेटा. A to B isochoric, B to C isobaric, C to D isochoric, D to A isobaric. तो दो processes है यहाँ पर. So total heat supplied will be equal to how much? 39. So Q is equals to Q to go from A to B plus Q to go from your B to C. A to B में volume constant है, so this is your N into CV into your delta T plus next में pressure constant है N into CP into delta T. So number of moles कितने हैं बेटा यहाँ पर? Mass by molecular weight. Helium gas मतलब 2He4. चलिए, number of moles दे रखा है क्या प्रॉब्लम है? 2 isobaric, 2 isochoric, the total heat supplied will be equal to what? Okay. CV value will be equal to how much better? Helium monoatomic 3 by 2 times of R. Am की value as it is N रहेगी. Delta T temperature of the B minus temperature of your A. अब मुझे temperature में लिखना है यहाँ पर. A वाला थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पर. TB minus TA. You can use your ideal gas equation. TB is equal to nRT. Plus ये हो गया N as it is. CP value for the helium gas will be equal to 3 by 2 into R into. यहाँ पर temperature will be equal to TC minus of TD. कोई बोलेगा temperature कैसे लिख सकता हूँ मैं? I can use the formula PV is equals to NR into T. तो temperature लिखने का तरीका T is equals to PV by NR. मेरा हाँ so temperature T will be equal to PV divided by NR. तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए 3 by 2 NR into temperature of the B will be equal to pressure at B, volume at your B divided by N into R. This is minus temperature at your A, pressure at your A, volume at your A divided by NR plus this is 5 by 2 NR. Temperature at C will be equal to your pressure at your C, volume at C divided by NR minus pressure at your T, volume at your T divided by NR. हो गई बात. तो ये NR gets cancelled, NR will gets cancelled. तो ये हो गया 3 by 2 into pressure at B कितना है बेटा? Pressure at B is your 2 P naught into volume at B कितना है? V naught minus pressure at A कितना है बेटा? P naught, volume at A कितना है बेटा? V naught plus this one is 5 by 2 into pressure at C कितना है बेटा? 2 P naught, volume at C कितना है बेटा? 2 V naught minus pressure at D कितना है बेटा? P naught and volume at D कितना है बेटा? 2 V naught. तो ये हो गया मेरे पास 3 by 2 into 2 minus 1, this is 1, that is P naught V naught plus this is 5 by 2 into 4 minus 3, 2 2 is 4 है और ये 3 है. So ये भी हो जाएगा P naught into your P naught. आ गया? So this is the 3 by 2 plus 5 by 2 into P naught V naught will be the common. कितना आ रहा है देख लीजिए. आ गया? Good question बेटा. This is your 13 P naught V naught divided by 2. Done. चलो. Question number 41.
Question number 41. A container of large area has a small size square shaped hole of side L and circular hole of radius capital R at the depth of your H and as well as of your 4H from the top of the water. If the rate of flow from both the holes are same, then the relation between capital R and small r will be equal to how much? Direct question है बेटा. Equation of continuity लगा रहे यहाँ पर. Equation of continuity. Equation of continuity का फॉर्मूला क्या है बेटा? A1 V1 will be equal to A2 V2. Isn't it? First one का square है. Area of this square will be equal to L square. Velocity of Fx will be equal to how much? Under root of 2g into h. यहाँ से जो पानी निकलेगा, इसका velocity of Fx is under root of 2g into h. यहाँ से जो पानी निकलेगा, इसका velocity is under root of 2g into ये हो गया 4h. इसका एरिया हो जाएगा A2 और इसका एरिया हो जाएगा A1. So that is the area of the circular path will be equal to pi into your r square into velocity is under root of your 2g और इसका height है मेरे पास 4h. इसको simplify कर लीजिए. Under root of your 2gh और 2gh will get cancelled. तो ये वाला cancel हो जाएगा, A वाला और A वाला भी cancel हो जाएगा. So this is L square is equals to pi into your r square into this one is root 4. Root 4 मतलब 2. Done. Is asking the relation between capital R and small r. So capital R square is equals to L square divided by 2 pi. Yani capital R will be equal to L divided by root 2 pi. This will be the answer. करने वाला लायक क्वेश्चन है बेटा. R is equals to, this is L is equals to, कुछ ऑप्शन आ रहा है. L is equals to root 2 pi into R. L निकाल सकता हूँ इसमें से. L is equals to root 2 pi into capital R. First option. चलिए next one. 42. YDSC में दो questions पूछा देखो. Luckily. In Young's double-slit experiment, how many maxima can be obtained on a screen, including the central maxima on both the sides of central fringe of wavelength 2000 angstroms and T is given as of here 7000 angstrom. For maxima on a screen, we know that in YDSC, T into sin theta will be equal to N into lambda. Minimum of diffraction will also be the same, isn't it? यानी sin theta की value बन जाएगी मेरे पास N lambda divided by your D, isn't it? तो अब sin theta की value निकालो, इसमें से देखो कितना आ रहा. I'm doing here right now 42. Sin theta is equals to, that is N, wavelength कितना दे रखा है बेटा प्रॉब्लम में 2000 angstroms divided by T is given as of your 7000 angstrom. 30 gets cancelled, so it is your 2n divided by 7. So 2n divided by 7 मतलब कितना आ रहा देखिए बेटा, ये हो गया n divided by, this is sin theta. So it is 2 1s are 2 3s are 6 plus 3.5, isn't it? So यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ sin theta की value is greater than 1, isn't it? 3.5 मतलब 35 divided by 10 होगा ना, greater than 10 नहीं, greater than 1 ही होगा ना. ऊपर जितने आएंगे नीचे भी उतने आएंगे बेटा. n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू विल बी 0, सेंट्रल मैक्सिमा पड़ेगा 1 से तो ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है 3, है ना. ऊपर 3, नीचे 3, बीच का है 4, पूरे 7 आ जाएंगे. दैट विल बी इक्वल टू 7. डन. चलिए. The radio transmitter operates on a wavelength of 1500 meters at a power of 400 kilowatt. The number of photons will be equal to how much? Power is equals to your n times of your e per second बोल रहा है. Actually energy divided by time होता है, t is equals 1 second है, n into e. तो n की वैल्यू हो गई power divided by energy, isn't it? The radio transmitter operates on a wavelength of 1500 meters and power of your 400 kilowatts. Power की वैल्यू की दे रखा है 400 into 10 to the power of 3 divided by energy.
Energy is nothing but Hc divided by lambda. That means that will be equal to 400 into 10 to the power of 3 divided by Hc की value 12400 into wavelength. Wavelength कितना दे रखा है 1500. सिंप्लीफाई कर लीजिए. 12400 में 2 0 चले गए. So it is 4 into 15 into 10 to the power of 5 divided by 124. Done. 4 ones are 4 threes are 4 ones are 15 divided by 31. नियर बाई कर ले सकते हैं. देखो कितना आ रहा. कौन आ रहा? 3 into 10 to the power of 33. आया सभी को? चलिए 3 into 10 to the power of 33. एंगस्ट्रॉम में बिताना बेटा ये. वेवलेंथ into 10 to the power of -10 आ जाएगा. किलो is 10 to the power of 3. अच्छा 1500 मीटर्स में चाहिए. Done. 44. Two satellites are launched into circular orbits of radius r and 1.0 r from the surface of the Earth. The time period of the revolution of the second satellite is larger than that of the first one by approximately how much? Kepler's third law use कर लीजिए. P square is directly proportional to r cube. ये करके मुझे आप लोग भेजिए बेटा, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन का है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पार्ट है, टाइम लेके करिए आप लोग. दिस इज 1 प्लस आता है, ठीक है ना. कैन डू इट आउट, तो ट्राई कर लीजिए एक बार. देन 45 तो आप लोग को आता है, isn't it? The transfer characteristics of the common emitter amplifier is shown in the figure. Here column 1 and column 2 contains the plots of applications of the transistor. Match the column 1 and column 2. Region 1, region 2, region 3. You know that region 1 is known as of your cutoff region. Region 2 is known as of your active region. And third one is your saturation region. Cutoff region matlab switch off. Region 1 will be cut off. Region 1 will be switch off. यानी A must be 3. A must be 3 किस किस में? Second option में, third option, fourth one चले गया, first one चले गया. Region 2 will be equal to your amplifier. Active region is right now for amplifier. Saturation region is for your switch on. First one off है, उसके बाद amplifier है, फिर last में on है बेटा. यानी region 2 is your amplifier. यानी B must be region 2 must be equal to A. यानी B will be equal to 2. B will be equal to मतलब third option. Next one 46. ये तो करना है. If the error in the measurement of the radius of the sphere is 2%, then the error in the determination of surface area of this one will be equal to how much? Surface area को formula क्या होता है बेटा? 46. Area will be equal to your 4 pi into your r square. So delta A divided by A will be equal to 2 into delta r by r. Isn't it? Percentage में पूछ रहा है तो delta A by A into 100 कर लीजिए is equals to 2 into delta R by R into 100. Isn't it? So this will be equal to how much for a minute? ये पूरा percentage कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 2%. So 2 into 2 that will be equal to 4%. Direct question. Done. Question number 47 आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए. मैंने तो टिक कर दिया था. मैक्सिमम कर सकते हो, बट स्टिल यू कैन स्टिल ट्राई टू डू इट आउट द गिवन कंडीशंस. ये देखो बेटा, अगर मैं देख रहा हूँ
Spring of force constant to 2K is been attached with a mass capital M in the diagram shown. Work done by the spring force when the system is released from the rest to the maximum extension. जब इक्विलिब्रियम होगा तो इसका weight of the body that is mg will be balancing your spring constant beta that is k into your x. So can I say here right now m into g is balancing your 2k into your extension x. यानी x की वैल्यू हो गई mg divided by 2 into k, isn't it? mg by x will be equal to how much beta? Extension होगा ना x के लिए. अगर kx बैलेंस ऑफ योर mg होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? mg by k वैल्यू होगी. mg by k can written as of your right now 2k. तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो जाएगा बेटा? x max will be equal to maximum extension on its own weight will be equal to how much beta? mg by k. Isn't it? यहाँ पर देखो mg by k कितना हो जाएगा बेटा? 2 times of your x बन जाएगा. And extension will be equal to 2 times. And suddenly हो रहा है तो वर्क डन का फॉर्मूला w is equals to half into k into x square. So it is equals to your minus half k की वैल्यू हो गई 2k into एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? mg divided by k into whole square. यानी दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी 2 into 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू योर इसमें से k स्क्वायर में से एक वैल्यू k यहाँ पर भी चले जाएगा माइनस ऑफ योर m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय k. बच्चे डायरेक्टली x इज इक्वल टू mg by 2k लेते हैं बेटा, लेकिन उसने क्या बोला? मैक्सिमम एक्सटेंशन बोला. अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंशन मतलब x max की वैल्यू विल बिकम फॉर मी 2. ये हो जाएगी x max की फॉर्मूला. थर्ड ऑप्शन आ रहा है नहीं, m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय k आएगा. सेकंड ऑप्शन. गुड क्वेश्चन बेटा, ट्राई करिए. 49 भी कर सकते हैं. देखो टू फोर्सेस F1 दे रखा है, F2 देकर एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू हाउ मच? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय योर मास. दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं और बॉडी ऑफ मास इज एक्सेलरेटिंग अलोंग z एक्सिस. z एक्सिस का ही कंपोनेंट लेना है माइनस के. दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो फोर्स कितना बना जाएगा? -2 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1. so this will be -2 k cap will be the answer. Question number 50. The body is moving with a velocity v is equal to 2t. If the force is 5 Newton, then the time when the power delivered will be 20 watt will be equal to how much? Power is equals to force into velocity बेटा. फोर्स दे रखा है कितना है? 5 न्यूटन. वेलोसिटी दे रखा है 2t और पावर दे रखा है 20. तो कितना आ जा रहा? दिस इज 20 is equals to 5 to 10. ये वाला चला गया तो t is equals to 2 seconds. डायरेक्ट क्वेश्चन. ए भी करे अपन, ए भी करे एक्स्ट्रा टाइम के अंदर. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 क्वेश्चंस करे. 31 में अगर आपके 20 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट चले जाए, इट विल बी वेरी ग्रेट, isn't it? And 31 into 4 that will be equal to 124 marks. अगर इसमें बाय मिस्टेक अगर आप एक 5-6 क्वेश्चंस रॉन्ग भी कर लीजिए तो भी 100 के नजदीक आ जाएगा. क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था. देखो कृष्णा, 20 क्वेश्चन तो आप आंख मूंछ से कर सकते थे. फिर एक बार आप लोग ट्राई करिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. अच्छा वाला क्वेश्चन पेपर है, खाली फॉर्मूले से याद आने के थे. 1 से 2 बार इस पेपर को फिर से एक बार करिए. हमें क्लियर?
नहीं पता ये तेरे पास सारे रहते लेकिन औकात तो लग रही है सारे पैसे तेरे पास होंगे सबसे पता कहाँ से कमा के लाए तो बताओ तो मुझे इसका है क्यों हो रहा है आपको मुझे इस पर बैठा अब फिर कितना मालूम है ना ज़्यादा रखेगा बनाना ये इसमें प्रैक्टिकल होगा निकल कर बैंक में पैसे जमा कर आगे जा रहा था पिता मेरी पलट गई और मेरा पैसे पर बच गया सारे पैसे गिर गए आप ये पैर ऊपर रख दो छोड़ कर लगी ना आप ठीक है आप कभी तो आपको कहीं छोड़ दो नहीं लगता मैं अपने आप चला ध्यान रखना होगा जैसे मेरे ना पापा के दोस्त हैं यहाँ के बॉस को मेरी अप्रोच है अच्छी बात है जैसे ना मैनेजर तो कैबिन भी बहुत अच्छा है मैं तो पहले से देख रखा चलिए कोई बात नहीं हम भी छोटी बात तो ना मेरा सारा रिलेटेड इतना हम तक को लेके अभी जो स्टार्ट होने वाला सर तो क्या ये पे चल रहा है इंटरव्यू तो इनको हो रहा है आपका टाइम देखा है कितना टाइम हो रहा है और सर वो क्या है ना एक नीचे ना हमारे अंकल खड़े हुए थे नीचे से बस मुझे मदद करने में लग गया था इसलिए मैं लेट हो गया अभी तो सर आए नहीं है अभी मैं आपको एंट्री दे रहा हूँ हमारे सर ना 95 पंचुअल है तो प्लीज आप यहाँ पर वेट कर लीजिए जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा ओके सर एक बार अपने कपड़े को गई हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ आप इंटरव्यू देने ही आए हैं ना यहाँ पे कहीं बास्केटबॉल खेल रहे हैं मेरे को कोई दूसरा काम करने वाला हाँ मुझसे कुछ ऐसे टेंथ का कोई बच्चे भी है